अभी आते हैं एलाही द प्रोड्यूसर. So Nagesh gave you the launching pad and you have not looked back. एक चीज बताइए, I'll ask you 2 सवाल पूछूंगा एक ही उसमें, प्लीज टेक योर टाइम. एक तो आपका 9 to 5 या पता नहीं, I got the timing wrong, it's 24 hours or 9 to 5 whatever. How does it, what happens in between 9 to 5? और दूसरा, ये छोटे से कद में ये दिमाग में क्या चलता है ड्यूरिंग दैट टाइम? तो आवर्स तो कुछ है नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग और डिफरेंट जो डिफरेंट चीजें चल रही उस हिसाब से होता है. सो द ओनली टाइम व्हेन देयर इज एन ऑर्डर ऑफ टाइम इज व्हेन वी आर शूटिंग, बिकॉज वो शिफ्ट वाइज रहता है. तो 7 की शिफ्ट कर रहे हैं या 9 की शिफ्ट कर रहे हैं या 2 in the afternoon की शिफ्ट कर रहे हैं या नाइट शिफ्ट कर रहे हैं. तो दिस इज द ओनली टाइम वेयर देयर आर आवर्स. नहीं तो प्री प्रोडक्शन में तो सुबह से रात तक रहता, 4 बजे फोन आता सुबह के. प्री प्रोडक्शन मीन्स व्हाट? When you're preparing to go on the shoot, that's when you're casting, you're doing all your art breakdown, you're doing your script का breakdown जो है, locations देख रहे, वो सब, that is what the pre-production is. And post-production is when you are doing what needs to complete the film after the shooting. So the editing, the music, the sound effects and stuff like that. So usme again that I'm not very much involved in, because I just see after the edit is done and stuff like that. So then those hours are different. So I immediately come back to Hyderabad and come home. तो वो है. And छोटा खद देखो बहुत प्रॉब्लम्स है. एक तो छोटा खद, ऊपर से वुमन, ऊपर से नॉट born from in a star family or right. coming and that to making the movies we make. It's not like ये पूरा पैकेज लेके हम लोग एक दबंग बना दिए या मेन स्ट्रीम फिल्म बनाए. So there were many battles to fight, but one was really about the height. कितने बार मैं ऐसा फोन पे मीटिंग्स लेती थी. We fix up a meeting on the phone and then you say कि आ जाइए 4 बजे whatever. You walk into the room and वो जो आदमी का एक्सप्रेशन रहता नहीं, he's like, where is your mother? I'm like, I am my mother only. I only talk to you on the phone. It is me. तो वैसा. फिर सेट पे they don't take you seriously. तो हर चीज को नगेश को पूछने जाते थे. सर, so नगेश was like, मेरे को नहीं मालूम, मैम को पूछो. So this used to go on. So then we devised a plan के we would hire an assistant director so that I could fire him or her on day 5 or 6 of the shoot. तो फिर लोगों को मालूम पड़ना कि I am the boss. तो उसको पहले बोलते थे, देखो हम तुमको फायर कर देंगे, तुमको बहुत पैसे देंगे, तो ये बेइज्जती लेके चले जाओ. ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. तो वो सब. अच्छा, अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ. कमिंग टू प्री प्रोडक्शन, जब आप फंड रेजिंग करती थी इनिशियल डेज में, आई सीन अ वीडियो ऑफ योर्स वेयर यू मेड अ कमेंट कि शाम में फोन करते थे और सुबह 11:30 बजे की मीटिंग फिक्स कर देते थे और आप भागते थे. Give me 1 or 2 experiences that were either hilarious or simply obnoxious. There are many. हाँ भाई वाह, we've learned कि just ऐसा पैसे मांगना बोल तो पहले डाइव करना, नहीं बोले तो कपड़ा झटा के दूसरे पहना ढूंढना डाइव करने के वास्ते. There is no, एक शर्म नहीं रहना. There is no this thing in asking money. And the funny part about the world, I think, not just the industry, is that जिसको पैसे है ना, उसी को पैसे देना चाहते लोग. जिसके पास पैसे नहीं उसको नहीं देना चाहते. तो जब उन्हें बोले थे कि लाइक हैदराबाद ब्लूज तो तुमने 17 लाख में बनाए, अब ये कहीं को 30 लाख होना है इसको, मगर आप स्क्रिप्ट पढ़िए तो दे बिग प्रोड्यूसर्स हु वुड रीड द स्क्रिप्ट एंड से हाँ मेरे को बनाना है ये आप लोगों के साथ, मगर इसको आप 20 लाख में बना के दो. सो आई वुड से सर आप ही बना लो, बिकॉज मेरे से तो नहीं बन सकती 20 लाख में. एंड देन लाइक आई सेड, मैं हैदराबाद में रहती थी, उन लोगों को फोन करके ऐसा 1 बार करो 2 बार करो. दोज डेज वाज जस्ट लैंडलाइंस. But those days people were much nicer. They would answer their phones. They would, keep their commitments and stuff like that. So I would call and say, can we have a meeting? They'd say, जी अच्छा कल सुबह 10 बजे या कल सुबह 11 बजे. कैसा हूँ मैं? So I take an overnight bus and put a airline tag on my handbag. वाह. Or purse when I walked in. तो उन्हें समझना कि मैं सुबह प्लेन में आई और मैं वैसा सर ड्रॉप ऑफ द हैट बोल तो टिकट खरीद लेके प्लेन में पॉश चले जा सकती मीटिंग में. वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ. ओके, क्या कर सकते, बिकॉज ओनली इवन अस एज ह्यूमन बीइंग्स, इफ यू वांट टू गो टू अ वेल टू डू पर्सनस हाउस और उसकी बर्थडे है तो अपन 10 बार सोचेंगे क्या देना. उसके पास तो सबिच है, उसको एक क्रिस्टल वाज देना या सिल्वर की चीज देना, बहुत ऐसा दिमाग लगाते. और कोई नॉट वे सो वेल टू डू लोगों के पास जाना है बोलते अरे एक मिठाई का डब्बा लेके चले जाएंगे, ये चॉकलेट के पैकेट, सो इट्स सो बिजार. सो आई नेवर डू दैट. मैं अमीरों को प्रेजेंट देती हूँ नहीं. ओनली पीपल हु आर लिटिल लेसर देन मी, आई
look So after you have them given well. me a question to ask you. You said about something about 15-20 lakh. So if I am not wrong, 15 लाख के बजट में हैदराबाद ब्लूज बनी थी 17 lakhs. 25 साल हो गए, शायद 2 zeros ऐड हो चुके हों, आई डोंट नो. आज की डेट में हाउ डू यू प्लान अ बजट ऑफ अ मूवी? लाइक एक बार बजट बन गया बट सडनली एक स्टार मिल गया जो मतलब 25% में आ गया और आपका बजट हेवायर हो गया, बट यू नीड दैट स्टार इन योर मूवी क्योंकि मूवी में 4 चांद लग जाएंगे. योर एक्सेल शीट गोज आउट ऑफ द विंडो. फिर आप फायर फाइटिंग करते हो, क्या करते हो? इफ यू गो टू रेज मनी, शायद पैसा मिले ना मिले. हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? स्टार मिल गया तो पैसे मिल जाते. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इफ यू फाइंड like of course a lister who can recover. So you let's say you make कौन सी पिक्चर लूं मैं आपको मेरे साथ, let's say इकबाल. इकबाल में there was a newcomer, we needed a newcomer, he was 19 years old. There was Nasiruddin Shah and there was Girish Karnad. But let's say Nasiruddin Shah के जगह पे अक्षय कुमार आ गया. There's no question. जो वो 1 करोड़ की पिक्चर बनी थी, they would pay Aki 18 crores and they would give us a budget to go because the recovery would be that much. No, that's understandable. Okay. It's completely understandable. So if a star is attached, budget haywire हुआ, पैसे मिल जाते हैं उसके. Sometimes ये होता है कि budget haywire होता है when there are no stars attached. That's when the firefighting starts. All right. That's when you you realize. Experienced that? Yes, we have. Because चीज़ा होते कभी like we were doing a movie in Rajasthan with no stars, and in Rajasthan it rained. It poured, बोलो तो there were floods. So we had to pack up and come back. So like 4 days we waited in Rajasthan कि कल shoot करेंगे, परसों shoot करेंगे. In an entire schedule of a 38 day schedule, we managed to shoot 3 days. But we'd already stayed a week. So then we had to make the call saying, no, this is ridiculous. Let's all just go back. We'll come back in a month later when there are no rains. We came back a month later, but we'd already spent 3 days of a shoot and 5 days of stay. Yeah. So 8 days were lost. So we had to make the movie with 8 days less to spare. It counts? Hugely. There were times when you were shooting day and night. We had to go back and renegotiate actors with their pay packages. एक चीज बताइए, talking of script, आप you go by some calculation or you go by a sixth sense की somebody narrates you something and कुछ जज गया तो कर लिया? Is it like that or is there something more to it? I only work with Nagesh and Nagesh writes his own scripts. So yes, there are times when he wants to make a certain script and I want to do something else. But the director's conviction is always better to go by because then they carry a lot of heavy weight. Heavy lifting unla zyada karte. But yeah, there are times when it's just a sixth sense. When I know like this, like Iqbal. Iqbal was actually a story written by Nagesh for President Abdul J. Kalam, APJ Kalam on his second term. Or second year of his term. And when I read that story, I said, this is a film. Nagesh, it just can't be left as a short story in a book, in the president's office. It has to be a film. So Nagesh then wrote the script. तो वो हुआ. Door में जो आप बोल रहे, when we were doing Door, a producer was doing Door. About a week, and he wanted A-lister actors. नहीं मिले. Finally, we agreed on 2 actors. And then a week before the shoot, he pulled out. And we had no money. And our team had started moving to Rajasthan. So I went to another producer, and the other producer said, okay, I'll do it, but 20% less. So I had to renegotiate the monies that I was going to give my cameraman, I was going to give the director, I was going to give the other actors, and Door, then it became what it became. But it was made with a 20% less budget than we had budgeted. इकबाल के बारे में पूछता हूँ, मलखाम का क्या? What is मलखाम? Exactly. Malkham is a sport which is most famous in Maharashtra. It is a sport done on wooden ऐसा खंबे, big fat, उसके ऊपर acrobatics करते. It's fascinating. मतलब you look at it and you're like, how are these people doing it? तो नगेश एक दिन बैठे बैठे वो मलखम देखा, अरे बोला क्या स्पोर्ट है, चलो मैं इसको एक स्क्रिप्ट में लिखता हूँ बोल के. इकबाल की काइंड ऑफ स्टोरी मलखम, where this boy is doing मलखम, छोटा बच्चा है, उन्हें ब्लाइंड है, तो एक्रोबैट्स कर रहा है whatever, and this coach is a drunk मलखम चैंपियन. अब किसी को मलखम ही नहीं मालूम, तो हम लोगों के पास जाके बाय द टाइम जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर टीम, एंड वीड गो एंड they'd say, सर ये स्टोरी है, एंड they'd be smiling, मलखम है, like मलखम बोल तो सो देखो ये मलखम नहीं चल रहा भाई, we have to change it. So we made it cricket, and then cricket the whole nation understands. So बोलने की जरूरत नहीं है, you just say, you are saying a blind boy and his out of work coach win a Malkham championship.
Okay. As opposed to a deaf mute boy plays cricket for India. Immediate smile. ये लो पैसे. Got it. So you have to make it where it's more accessible. That time there was not like net or OTT where a variety of people saw, right? There were so many hedgings, which is a target audience, कब release करना, रमजान में नहीं release करते थे, monsoon, and we have broken all norms. We released Hyderabad Blues in the Bombay monsoons on July 17th, where it was raining, and the first show we were sure was going to be a washout, and the first show was completely houseful. Right. So there are hindsight में हम लोग बहुत बोल सकते हैं, जब करने जा रहे हैं जब you are not that sure. No? One more question on Iqbal. You said Nagesh wrote the script and I'm a little confused. इसका तो बुक लिखा गया था बाद में, after the movie. बुक नहीं थी, it was a short story he wrote to commemorate APJ Kalam. Oh. तो जब उसमें buffaloes थे, उसमें ये थे, Malcolm was a completely different thing. So we adapted the story and made it about cricket and merge Malcolm and this, वो coach लाके उसको ये करे. He did the story about this boy and his buffaloes and how he used to name them after cricketers and how he played. So we merged both those stories.